And now we will take you to Aurangabad city of Maharashtra, where showcasing a gesture of religious unity and brotherhood, a Muslim man had given his land for organizing Shiv Puran, a 5-day-long Hindu religious program. Take a look. India is a country where examples of peaceful coexistence and religious harmony could be easily spotted in every nook and corner of the country. It is quite common to see people of different religious communities not just actively participating in each other's festivals, but also contributing to them in all possible ways. A recent example was seen in the Parbhani town of Maharashtra, where a Muslim family offered 60 acres of land for organizing Shiv Puran, a 5-day-long religious Hindu program. रिसेंटली हमारे यहाँ लक्ष्मी नगरी में शिव पुराण कथा हुई, जिसके ऑर्गेनाइज़र थे हमारे यहाँ के एमपी श्री संजय जादव जी। उन्हें उस कथा के लिए हमारी जगह समझ में आई, हमने बिना टाइम वेस्ट किए उनको उसके लिए हाँ बोल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इवेंट आज सक्सेसफुल हो गया। हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले एक इज्तिमा भी हुआ था, उसके लिए सारे हिंदू भाइयों ने अपनी अपनी जगह दी थी। यही हमारे परभनी की स्पेशलिटी है। It was when a politician was looking for a place to organize the event. The Sayyed family offered their land as a gesture of brotherhood between the two communities. The gesture of this family is winning hearts and is also making rounds on media. 5 दिवसीय इस कथा के आयोजन में सबसे अहम बात ये थी कि जिस जगह पर ये इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, उसमें जगह का जो मालिक है वो एक मुस्लिम भाई है और दुनिया में एक मिसाल यहाँ पर परभनी में कायम की है कि हिंदू भाइयों के इस जो पुराण के कथा में एक मुस्लिम भाई ने हमें जगह यहाँ पर प्राप्त करके दी है। एक भाईचारा इस देश में जो बढ़ना चाहिए, उसका एक सबसे बड़ा प्रतीक, एक मिसाल यहाँ पर दी गई है। It is through instances like these that India stands as an undefeatable example of one of the most secular nations around the world.